एक ऐप से सब कुछ हो जाएगा, मेमोरी भी कम लगेगी, लेट मी जस्ट गो टू वन ऐप रादर देन 20 apps. पेमेंट के अलग, ट्रैवल के लिए अलग, होटल्स के लिए अलग. They're always trying to solve the mystery of what's on the mind of the customer before they think of it. Let's think of it and solve their problem. According to Gartner, by 2025, 50% of world's population would be using multiple super apps. हमारा जो culture है, in the Asian context, you can say, it's more about मेरा दोस्त कर रहा है, मेरी फैमिली कर रही है, आई ऑल्सो वांट टू डू इट. और जब हमें पता चलता है कि कोई लॉयल्टी है, कोई डिस्काउंट है, हम कहते हैं हाँ हाँ, आप हमारा ये वाला डेटा भी ले लो, आप मुझे और पॉइंट्स देते रहो. तो सोच क्या होती है, ज्यादा लेना है. Once they figure out there is a market gap, they want to be having the first mover advantage to move in that direction and do it. या साथ ही साथ साइबर अटैक्स की भी बात करनी है. आई थिंक इस बारे में जरूर बनती है. कितने लोग अनबैंक्ड हैं, उनको लगेगा कि सिंगापुर में अनबैंक्ड लोग नहीं हैं, meaning everyone has a bank account, some sort of a banking relationship, but that's not true. That statement is not true at all. Hello everyone, this is Dipali from Millennium Times, and today we are going to have a discussion on SuperApps. Well, a super app is a front-end platform which have mini apps or mini programs, and that can be published or changed according to the user's need. Right, and that's what I know, but to give us an enlightened overview about what is SuperApps, we have with us Ms. Neha Mehta, who is a Pacific Regional Lead at UN Capital Development Fund covering 11 countries across South and North Pacific. She is a lawyer, an international development through, specialist focusing on digital financial services, financial inclusion through FinTech, renewable resources, blended finance, climate technology, and then one more designation is added, which is of an author because she has an upcoming book coming out in the name of One Stop. And rest, let's hear it from Neha herself. Hi Neha, how are you doing today? Hi Dipali, I'm doing great. Thank you so much for having me, and thanks for the lovely introduction. Very happy to be here today. Thank you. Right. Neha, in the beginning, I just gave an impromptu definition of what is super app, but I want you to define what is super app and what, in your opinion, distinguishes it from other applications. Sure, thanks Dipali, and I think you did a great job in defining it. Super app, like you said, is something that encompasses mini apps, mini programs. And to give an example, when we talk about the super apps in China like WeChat, it has got million programs in it. That's right. It has got million programs, and people typically spend 90 to 97% of their time on such an app. So it's your one-stop solution for everything under the sun. It can take you from dating to booking your air ticket to having your next meal, taking you to the next location where you're heading to. So it solves all your needs, and you don't really have to leave the ecosystem of the super app. And that's the beauty of it. Because once it onboards you as a customer, it has all your financial information. So it's one login, and that's through that one login, you're able to do multitude of services. And that's why it's called super. It's mega in nature. It's like a Swiss Army knife, just one open, and then you get everything. And how is it different from any other app? Because back in the day when we were just getting started with apps, you must have a recollection of these apps were specialized in nature. Just one service doing a great job of it. Yes. And then it evolved into one more step ahead. What else does the customer need? Just constantly thinking on what else is required. And that's how the founders, the app developers continue to go from one to the other. And now there's no end to it. They're always trying to solve the mystery of what's on the mind of the customer before they think of it. Let's think of it and solve their problem. So I think the world of super apps is very fascinating, and that's the reason I decided to do this book. And I'm sure we're going to talk more about it. Surely. Now that you've given us a detailed definition about super apps, what trends do you see, globally adopted by the super apps? How are they evolving to meet the changing needs of users? Yeah, Dipali, before I answer that, I wanted to tell you, according to Gartner, by 2025, 50% of world's population would be using
multiple super apps. So that's how our world is going to look like. So this trend is here to stay. And I think that's one of the reasons why I decided to do this book, because there's no literature on super apps. It's a trend that you cannot really ignore and say, I don't want to do this. So it's just going to be one of those things that you have to get on with. But when you really talk about the super app trend, I think it's about mega data as well, because we were talking about super apps. And then when we talk about the ability to give so much to us, where does it come from? It really stems from all the data they have been taking from us. So the personalization of what Dipali wants, what time she gets home. She's a working woman. So this is the time after 9 p.m. is a good time to deliver her goods to her. So I think that kind of metadata and the ability to personalize it that suits you, that suits the customer, is what it's going to be about. And I think a good sense of personalization also brings how the data is being managed, right? So, taking care of the regulatory aspects of it around the privacy. And I know we're going to talk more about it, but I think that's one of the trends, or rather the regulatory restrictions that super apps oftentimes find themselves into. And and then third, I would say a trend which is coming from Asia only. Because when you look at super apps, all the big names in the market, you will see them only in the Eastern market. That's one of the reasons why I decided to keep a chapter just on East versus the West, because there are no super apps coming from the Western world. Of course, they're in the making. And we also know Elon Musk has made the huge announcement of bringing Yeah. Twitter X into the super world. So there is a high likelihood of super apps coming from that side, but East is where the real action is. And lastly, I would say that when we talk about the super apps, something I personally want to see, and I think it's already on the path of financial inclusion, because tech is a big enabler for bringing change, for creating impact, especially for the last mile, for underbanked and unbanked people. And I feel super apps would have that virtue of reaching so many people in one go and solving the problem of banking, because we don't need banks, we need banking. Yeah, absolutely. Okay, Neha. So I think what you just said is it is becoming a globally adaptive platform now. And it might not be limited to a certain area, but can we say that it is, more published into certain area? Are there any specific regions where these super apps are gaining more attraction? And if it is, then why? What is the reason behind it? Yeah, so like I was saying before, East is where the real action is. पर ऐसा क्यों होता है? That's the question. और उसका आंसर आई थिंक इसमें जाता है कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड से. जब आप किसी इंसान को देखते हैं जो कि यूरोप में है या यूएस में है, उनके उनकी एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी होती है जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कितना डेटा देना है, उस पर कितना कंट्रोल रखना है, कंसेंट देनी है नहीं देनी, वो सब जानना चाहते हैं. दे आर वेरी अवेयर. एंड हमारा जो कल्चर है इन द एशियन कॉन्टेक्स्ट, यू कैन से इट्स मोर अबाउट मेरा दोस्त कर रहा है, मेरी फैमिली कर रही है, आई ऑल्सो वांट टू डू इट, राइट? Yes. सो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इफ एवरीवन इज सेइंग सो, वो सच ही होगा. सो इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, बट एक हर्ड मेंटालिटी जिसे कहा जाता है वो बहुत ज्यादा है. और जब हमें पता चलता है कि कोई लॉयल्टी है, कोई डिस्काउंट है, हम कहते हैं हाँ हाँ, आप हमारा ये वाला डेटा भी ले लो, आप मुझे और पॉइंट्स देते रहो. सो आई थिंक दैट एस्पेक्ट इज मिसिंग. और उससे होता क्या है कि हम जब एक ऐप की बात करते हैं, सुपर ऐप को छोड़िए, उसमें हम स्टिकीनेस की बात कर रहे हैं कि हम कितनी बार लौट के उसमें जाते हैं, और जब हम जाते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस है वो कितना फ्रिक्शनलेस रहता है. द मोर यू कैन डू विथ लेस ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट सुपर ऐप इज अबाउट. आप बार बार आते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, यू वांट गो बैक. आप बार बार आते हैं, क्लंकी एक्सपीरियंस है, मजा नहीं आ रहा, आप वापस नहीं आएंगे, एंड देन यू ड्रॉप आउट. तो वो Yeah. एक चीज है. और एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपके ऑडियंस शायद से पहले से जानता होगा, वो है कि ये सारे सुपर ऐप्स, दीपाली आप देखेंगे तो ये वी चैट, अली पेज, जो सबसे पहले चाइना में 2011 में चालू हुई, तब से Yes. लेके अब तक चाइना में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है बहुत ही कंट्रोल्ड है. कोई भी टेक प्लेयर, फेसबुक, गूगल वहां पे नहीं आ पाए. तो जो एक प्लेयर चल रहा था, उसी ने एडवांटेज लेते हुए उसको अच्छी सर्विस बनाई, उसको रिवैम्प किया, इवॉल्व किया,
जिसके चलते द कस्टमर वाज जस्ट स्टिकिंग टू वन ऐप, केप्ट गेटिंग बेटर एक्सपीरियंस, बेटर यूआई, और वो वहीं पे रहे। और वहां से चाइना की पॉपुलेशन इतनी मैसिव है, रेगुलेटर्स ने भी बहुत सपोर्ट दिया, तो वो एक ट्रेंड बन गया और पूरी दुनिया के लिए बेस्ट एग्जाम्पल बन गया। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। और ऑफ कोर्स हर एक कल्चर अलग है जिसका एक सपोर्टिव रीजन रहा है, बट दैट्स द मेन केस स्टडी कि चाइना ने कैसे शुरू किया, एंड ऑफ कोर्स वो एनवायरनमेंट ऐसा था। बट उसके अलावा आई थिंक इट्स ऑल्सो द फैक्ट, जो मैं बताना चाहूंगी ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कि हम लोगों ने जब अपना इंटरेक्शन एक ऑनलाइन वर्ल्ड से शुरू किया, इट वाज मोर ऑफ मोबाइल डिवाइस, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक डेस्कटॉप यूज किया, एक लैपटॉप यूज किया, और फिर उनको मोबाइल डिवाइस में इतनी दिलचस्पी नहीं रही। हमारा सारा टाइम मोबाइल पे ही रहा क्योंकि हमने अपने इंटरेक्शन से शुरू करी। तो अभी अगर मैं अपनी मम्मी की बात करती हूँ, अगर वो एक ऐप को सीख ले और सब कुछ उससे कर ले, इट्स नॉट मोर इजियर रादर देन मैं उनको लैपटॉप भी सिखाऊं और ये सब सिखाऊं और मल्टीपल ऐप सिखाऊं, राइट? तो वो एक एशियन एक्सपीरियंस है। हम इंडिया की बात करते हैं, चीपेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड, 4G 5G पूरी दुनिया में इतना नहीं है जितना कि इंडिया में है। जियो ने ऐसा मैसिव कंपटीशन रखा है मार्केट में, तो जिसके चलते वी डोंट माइंड डाउनलोड करने के लिए, बट मेमोरी स्पेस का भी एक इशू है, जो कि हमें लगता है कि अरे यार, एक ऐप से सब कुछ हो जाएगा, मेमोरी भी कम लगेगी, लेट मी जस्ट गो टू वन ऐप रादर देन 20 एप्स, पेमेंट के अलग, ट्रैवल के लिए अलग, होटल्स के लिए अलग। सो दैट्स Absolutely. What I can conclude is that there is a need of consistency and obedience in India to have something like that. Also, creating something for the sake of good carries a lot of challenge with it. So, what technological challenges do Super App faces, especially, concerning the security, data privacy? Since there's a lot of data, if I talk about in today's generation, there's a lot of data, and people are more concerned about their data security and privacy. So, what are the challenges that Super App faces? हाँ, तो आपने बहुत सही चीज कही दीपाली, एंड दैट्स द हॉट टॉपिक इन टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो जो दो तीन चीजें हमारे दिमाग में आती हैं वो ये है कि हम कितना शेयर करना चाहते हैं, दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज हम उसके बारे में कंसेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, हमसे पूछा गया, हमारी कंसेंट थी या नहीं। एंड नंबर थ्री इज वो कंट्रोल कैसे हो रहा है वो डेटा, उसको कौन रख रहा है और किधर रख रहा है। इज इट स्टोर्ड इन इंडिया, इज इट स्टोर्ड इन यूरोप, वहां की रेगुलेशन क्या कहती है, और आप कहाँ के कस्टमर हैं। क्योंकि मैं लॉयर हूं, तो ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझको खास तौर पे। और जब आप वो सब कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ यूज होगा। क्या आप तक ही सीमित रहेगा एज अ कंपनी, एज अ प्लेयर जिसको मैंने दिया था। मैं एक सुपर ऐप में गई, वेदर इट्स पेटीएम, ग्रैब फ्रॉम सिंगापुर, is it just going to stay there, or is it being shared with someone else? I need to know. My data, I control it. So that kind of autonomy is it's there. पर हर एक कंट्री बहुत ही ट्रिकी है, तो हर एक के बारे में हर एक को आप सेम ब्रश से पेंट नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते व्हाट वर्क्स इन सिंगापुर, व्हाट वर्क इन इंडिया विल वर्क इन द नेदरलैंड्स। आप जानते हैं यूरोप में जीडीपीआर है, और वो डेटा प्रोटेक्शन को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर आप किसी यूरोपियन वेबसाइट पे जाते हैं, इवन दो आप इंडिया में बैठे हैं या सिंगापुर में बैठे हैं, जो आपका डेटा है वो शेयर कर रहे हैं और हर बारी कंसेंट लेते हैं आपसे। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। इट्स द माइंडसेट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, और वो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में भी आ रहा है। और उससे जो एक चैलेंज आता है, और ये खास तौर पे मुझे याद है, मैंने समीर निगम जो कि फोन पे के फाउंडर हैं, उनसे बात करी थी, और उन्होंने मुझे कहा कि उनकी कोशिश ये रहती है कि कम से कम डेटा में कैसे से ज्यादा दे सके। सो आई थिंक डूइंग मोर विथ लेस, राइट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम ज्यादा लें, उसको कहाँ रखें, और इन सब चीजों के बारे में सोचें। एंड आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि अधिकतर सोच क्या होती है, ज्यादा लेना है। हाँ, उनकी ऐसी सोच नहीं थी। सो दैट वाज रिफ्रेशिंग। पर अब जब हम सुपर ऐप्स की दुनिया में जा ही चुके हैं, और ऑलमोस्ट इट्स अ ट्रेंड जो मुझे लगता है रहेगा मार्केट में, तो उसके चलते हम किस तरह से ये इंश्योर कर सकते हैं, किस तरह से टेक कंपनीज इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी दिया जा रहा है उसको आप अच्छे और उसी यूज के लिए रख रहे हैं। और डेटा लीकेजेस are not uncommon, Dipali. We have seen that with Facebook. We have seen the Tokopedia in Indonesia. We have seen it all across. हमारे आधार के डेटा भी लीक होते रहते हैं time to time. So I think वो एक common occurrence बनती जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, but वो होता जा रहा है रेगुलर बेसिस पे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, बिकॉज एज वी स्पीक जैसे कि ईयू में जीडीपीआर आ गया है, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आसियान का जो एक ब्लॉक है 10 कंट्रीज का एशिया में, वहां पे भी स्टैंडर्ड रेगुलेशन डेटा शेयरिंग के ऊपर आ जाएगी। नॉट श्योर वो कब आएगी, बट इन द नियर फ्यूचर। और वो एक चीज टेक प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। Right, absolutely. I think gradually and eventually we will learn through things and experiences as well. And it is very important to learn things along the way since it helps us in the advancements. Right. And talking of that, we are really looking forward to your book. Tell us about your upcoming book and on super apps. Tell us something about it. Yes, Dipali. So the book is called One Stop, and I got the idea of writing the book, especially when I come back to India and I look at the kind of growth story India has in the fintech space. तो वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझको। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं कभी ऑथर नहीं बनना चाहती थी, बट जो मेरे को ऑथर है ही वॉकड आउट ऑफ मी। उन्होंने मुझसे ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया, उन्होंने कहा ये करते हैं, और वो चले गए छोड़ के बीच में। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई चीज मैंने लाइफ में लिया तो मुझे उसको जरूर खत्म करना है। आई Right. वांट टू टेक इट टू द फिनिशिंग लाइन। तो Yeah. मैंने इसमें तकरीबन 3 साल लगाए, पूरी रिसर्च करी। और मैंने बुक को 2 सेक्शंस में रखा है। पहला सेक्शन इज अबाउट माय रिसर्च और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सुपर एप्स को लेके, एंड इट कवर्स ग्लोबल नेम्स, ऑल द बिग प्लेयर्स। एंड इंटेंशन ये रहा है कि हम पूरी जर्नी पे लेके जाए रीडर को। आई नो कि आज की डेट में अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है लोगों का, सो इट्स Yeah. इम्पोर्टेंट कि हम एग्जाम्पल्स दें और उनको बड़ी रियलिस्टिक तरीके से बताएं कि पहले कैसे शुरू हुआ और वो कैसे कैसे इवॉल्व होते हुए सुपर और मेगा बन गया। Right. और Right. जो दूसरा सेक्शन है बुक का, वो टोटली इंटरव्यू बेस्ड है, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक रीडर जब पढ़ रहे हैं वो एक ऐसी जर्नी पे जाएं जहाँ पे उनको ऐसा लगे कि वो ऑलमोस्ट किसी से बात कर रहे हैं, और वो बातें करते करते क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। और जिन लोगों से जान रहे हैं दीपाली, वो कोशिश ये है कि वो एक रेगुलेटर है, इंडस्ट्रीज, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर हैं, और फिर फाउंडर्स हैं जिन्होंने ऐप शुरू करी थी। और मैं उनको पूरी दुनिया से मैंने कवर करने की कोशिश करी। और लकीली ये बुक फिर पेंगुइन को अच्छी लगी, उन्होंने ये इस बुक की डील साइन करी। और अभी 12 दिसंबर, 12th of December is when the book is going to be out in Singapore and then in India and the UK and the rest of the world internationally. और in just about 3 days from now सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल हो रहा है जहाँ पे मैं इस बुक को लॉन्च कर रही हूँ। So whoever is keen to read and wants to understand more about super app business, 12th of December is when the date is out. But pre-order links आ चुके हैं, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। Right. Absolutely. Being a reader myself, I think we are more inclined towards the conversation part because when you read something constantly, you want the conversation, you want it gets inside your head that it's happening. And I think that's very interesting part in your book, and we're really looking forward to it. But writing a book must have taught you a lot of things, a lot of, what will be the future or innovation. So how do you envision the future of these super apps and what innovation or changes will you anticipate in the coming years? So if nothing else, Dipali, at least I've learned patience by writing this book. Right. Let me tell you, patience is the key word. But मुझे जो चीज मतलब, of course this is I'm saying in a joking way, but I must tell you that something I've figured out about myself as a person is that I'm persistent by nature. और जब मैंने इन founders को interview किया तो मुझे ये भी समझ में आया कि they are also very persistent. Once they figured out there is a market gap, they want to be having the first mover advantage to move in that direction and do it. तो वो जो persistence है, वो जो passion है कि आपको better better बनना है, वो एक drive और hunger है उनके अंदर। But yes, to answer your question, मुझे ऐसा लगता है कि innovation जो है हमेशा एक God speed पे चलती है, और regulators जितना उससे दूर रहते हैं उतना बेटर रहता है इनोवेशन को। अगर आप इफ यू आर गोइंग एट सच अ पेस वेयर यू आर ट्राइंग टू स्टाइफल द इनोवेशन, you will kill the innovation and you will not let it thrive. और ये बात आगे इसलिए भी आई क्योंकि बुक में आप देखेंगे कि गवर्नर कंबोडिया नेशनल बैंक की है, सरी चिया, उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी यही बात बोली कि एज अ रेगुलेटर आई वांट टू टेक अ बैक सीट, आई वांट टू लेट innovation thrive, because when innovation thrives they're trying to solve problem, and in this case super apps I think is going to solve the problem of unbanked and underbanked people.
So I think that's the beauty of innovation, especially from super apps, where we call it as a tech of force. um, उसके अलावा मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की, उसके साथ साथ हमें रेगुलेशन को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे कि हमने डेटा प्राइवेसी की बात करी, या साथ ही साथ साइबर अटैक्स की भी बात करनी है। आई थिंक इस बारे में जरूर बनती है, क्योंकि इतने सारे अटैक हो जाते हैं, और खासतौर पे अगर आप मानिए आपका अगर फोन चोरी हो जाता है, और क्योंकि आजकल फोन में आपकी पूरी दुनिया बसी है और आपका डिजिटल वॉलेट है और वो चला जाता है, तो क्वेश्चन इज, जो कि एक आम इंसान के दिमाग में आएगा, कि मेरा इसमें से कितना कितना अमाउंट इंश्योर्ड है, राइट? क्या कभी हमने सोचने की कोशिश करी कि जो मेरा वॉलेट में पैसा है उसमें से कितना, 8,000, 10,000, 50,000, do you know how much, Dipali, your money is insured? We don't know, right? So I think it's very important that we ask these questions, and the players who are running this business, उनको ये सोच के रखना है, उन सब चीजों के बारे में सोचना है। तो innovation in that aspect is also important. और खासतौर पे जो एक चीज है दीपाली, हम अभी अभी कोविड से निकले हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने बोला दो चीजें, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, और उन्होंने बोला गो लोकल, राइट? क्योंकि हम लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुपर ऐप की जो ब्यूटी है वो ये भी है कि किस तरह से वो एसएमईज, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको एक लार्जर ऑडियंस देता है। एंड इस बारे में हमने दीपाली शायद से बात नहीं करी, पर आप देखेंगे कि अगर मैं फोन पे में, इंडिया के एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी आपसे, अगर मैं उस पर अपना बिजनेस रजिस्टर करती हूँ और मेरे पास ऑप्शंस आती है इतनी वाइडर ऑडियंस की, पर अगर मैं अपना खुद का वो बिजनेस छोटे लेवल पे कर रही होती, ई कॉमर्स साइट होती, तो आई कैन नेवर रीच टू सो मेनी पीपल. So this is the beauty of an app that lets you interact with so many people who are in your near vicinity. हम कोई 200 किलोमीटर दूर की बात नहीं कर रहे, जो आपके 50 किलोमीटर के रेडियस में है. सो आप इमेजिन करिए, आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और आप ऐसे प्लेटफॉर्म में जाते हैं, एंड इंडिया इज ऑल अबाउट लघु बिजनेस, छोटे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, राइट? इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, इन इट्स स्मॉल टाउन्स, टीयर बी, टीयर सी. तो अगर हम वहां पे इन एप्स को लेके जाते हैं और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं आप इसको ट्राई करिए, यूथ को बोलते हैं, तो जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का एक दौर चल रहा है अभी इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया, I think that trend is going to continue, whether it's Vietnam, Thailand, Singapore, across the world. So वो जो एक entrepreneurship की spirit रहेगी, ऑनलाइन पेमेंट्स की स्पिरिट रहेगी, एंड अगर हम सुपर ऐप्स को जनरली भी आप देखें तो आपको पता चल जाएगा एक कॉमन ट्रेंड क्या है, कि हम पेमेंट से शुरू करते हैं और फिर उसमें सब कुछ आता रहता है. सो पेमेंट्स इज योर फर्स्ट पुल, वो आपको पेमेंट्स के थ्रू खींच के लाते हैं और फिर आपको सब कुछ दे देते हैं. So if we want to launch an app into a new business, into a new market, तो usually अगर आप payments अच्छी तरीके से कर लें, then most likely आपकी journey बहुत आसान हो जाती है. Absolutely. I think besides side by side about the super apps, I am also going to learn the patience that you mentioned because we all need it in today's world. Coming to my last question, Neha, how super apps are revolutionizing the FinTech industry? Since you mentioned the financial inclusiveness, tell me, how is it revolutionizing the FinTech industries? दीपाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं. हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे ब्लैक रॉक के साथ सिंगापुर में, और अधिकतर आपके ऑडियंस से आप जरूर पूछिएगा एक पोल लेके कि उनको क्या लगता है कि सिंगापुर में कितने लोग अनबैंक्ड हैं. उनको लगेगा कि सिंगापुर में अनबैंक्ड लोग नहीं है, मीनिंग एवरीवन हैज अ बैंक अकाउंट, सम सॉर्ट ऑफ अ बैंकिंग रिलेशनशिप. बट दैट्स नॉट ट्रू. दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं सिंगापुर में. बहुत सारी ऐसी मेड्स आती हैं इंडिया, बांग्लादेश, चाइना से, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है. सो जो हमारा प्रोजेक्ट था वो इसी के ऊपर था कि हम किस तरह से इन ब्लू कॉलर वर्कर्स को, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने आते हैं, जो एक सिंगापुर में मेड की तरह काम करते हैं, उनको किस तरह से हम एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल रेजिलियंस के पाथ पे लेके जाएं, स्पेशली कोविड के बाद, जब हम सबको लगा कि हमारे पास खुद के पैसे होना तो इनफ है, बट अगर आप एज अ फॉरेन वर्कर आप अपने पैसों को वापस नहीं भिजवा पाएंगे अपने होम कंट्री, इट्स अ चैलेंज. And why I'm saying this is because during COVID, Singapore was having strict measures whereby remittances was not seen as an essential service. जिसका मतलब ये है कि रेमिटेंस एक एसेंशियल सर्विस नहीं है. आप उसका एक बहाना लेके घर से बाहर नहीं जा सकते. जब आप उसके लिए घर के बाहर नहीं जा सकते, तो आप एक अगर मेड हैं तो आप अपनी फैमिली को फिलीपींस में
इंडिया में, चाइना में कैसे रेमिटेंस भेजे और वो फैमिली कैसे चलेगी। तो जब मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो हमने एक प्रोग्राम रन किया और हमें पता चला दीपाली की सबसे इजी काम जो होना चाहिए, स्टेप 1, वो है जैसे अगर आपने अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को अगर ऑनलाइन पेमेंट दी, that's the first step towards victory. Because once they have the money into their wallet, they can invest it, they can send the money on the other side. और उस वो सुपर ऐप एग्जाम्पल में आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, फिनटेक की बात कर रहे थे, तो उसका सबसे एग्जाम्पल जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है ग्रैब, जो कि एक टैक्सी हेलिंग सर्विस की तरह शुरू हुई थी सिंगापुर में। अभी वो एक सुपर ऐप है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में है। उनके फाउंडर्स मलेशिया से हैं। उन्होंने रोबो एडवाइजरी रखी। रोबो एडवाइजरी मीनिंग छोटी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। रोबोटिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जो कि आपको मशीन बताती है कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है। $1 a डे। तो इन मेड्स ने उनके प्लेटफॉर्म पे गए, इन्वेस्टमेंट शुरू करी। एंड आई रिमेम्बर क्लियरली दीपाली, जब मैंने उनसे 6 महीने के बाद में बात करी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है अपनी फैमिली के लिए फिलीपींस में, उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, उनको स्टॉक्स की खबर है, उनको डिविडेंड की परिभाषा आती है। आई थिंक दैट वाज अ विक्ट्री फॉर मी, and that's the victory of fintech, that's the victory of super app, and that's the victory of going offline to online. Absolutely, that's an absolute victory. And I think that from this conversation, viewers are going to learn a lot of things. Since I also learned a lot of things, and I'm going to make the notes of all the knowledge that you've given to me. And I really appreciate you being here and answering all of our doubts and questions. Thank you so much, Neha, for being here. Thank you, Dipali. I had such a good time, and thank you so much for giving me the opportunity to talk about super apps. मुझे बहुत मजा आया, and hopefully I'll come back again for another discussion. Hope they get to read One Stop. Thank you. For more such informative videos, subscribe to our channel, Millennium Times.